Assalamu alaikum, dear students of class 12th. In our previous class, we talked about incomplete dominance. Incomplete dominance is an interaction wherein dominant and recessive relationship is not seen. Instead, we get a phenotype which is not showing one trait. Instead, it is showing a mixture of the two, an intermediate condition of the two. Incomplete dominance is actually a sort of partial dominance, wherein dominant is not able to express its effect fully. जैसे मैंने एग्जांपल दी फोरोकुला की, मिराबिलिस जलापा, या स्नैपड्रैगन जहाँ पे रेड एंड व्हाइट को क्रॉस करके हमें पिंक फ्लावर मिलता है. लेकिन मैंने आपको रिपीटेडली ये कहा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, प्रीमेंडेलियन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब हम इस रेड एंड व्हाइट को क्रॉस करके पिंक हासिल करते हैं F1 जनरेशन, और उन F1 को जब हम सेल्फिंग करते हैं, when pinks are crossed among themselves, we get red, white and pink in the ratio of 1:2:1. The uniqueness of incomplete dominance is that parental types express in F2 generation. So it is quantitative inheritance involving a single gene pair. And in incomplete dominance, both phenotypic as well as genotypic ratio is same. Now our today's topic is codominance. Codominance is a phenomenon of two alleles. Codominance is a phenomenon of two alleles. Alleles, alternative forms of the same gene, are called alleles. Two alleles lacking dominant recessive relationship. Dominant recessive relationship, and both the alleles express in the organism. कोडोमिनेंस हम उस इंट्राजीनिक इंटरेक्शन को कहते हैं या इंटरअलीलिक इंटरेक्शन को कहते हैं, जहां पे टू अलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स, फेल हो जाते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप दिखाने में, wherein there is no dominant recessive relation, wherein dominant recessive relationship is lacking between the alleles, and both the alleles express themselves in the organism. I may say wherein there is no dominant, there is no recessive. Both the alleles have equal opportunity, have equal ability to express. We refer that interaction, that phenomenon as codominance. The codominant alleles are able to express themselves independently. Codominant alleles are able to express
are able to express independently. Codominant alleles are able to express independently when present together. Intragenic interaction, interallelic interaction. Yath mans dominant recessive relationship yi na ati. Ya yete dominant recessive asen equally express gasan organismus mans. Tat interaction chis vanan codominance. Kya go codominance? Codominance is a phenomenon wherein two alleles lacking dominant रिसेसिव रिलेशनशिप. यहां कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं. Here both the alleles express themselves in the organism. When both the alleles have equal ability of expression, यानी ये dominant थे पर कैसे express इस पर recessive गए ताकि चाहिए नहीं तेरे dominant recessive relationship. ये क्या इस दोनों alleles में आगे जीन के दोनों alleles में dominant recessive relationship ये ना है. तथ कोडोमिनेंस मगर रात डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप तथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मगर तक इंटरमीडिएट फॉर्म बन ये इंटरमीडिएट फॉर्म बन कह हियर इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द कोडोमिनेंट alleles are able to express independently when present with. Here recessive has independence, dominant has independence of expression. मैं ऐसे समझूंगा, आपको समझा सकता हूं कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हमने बात की वहां जो F1 ऑफ स्प्रिंग बनता था वो इंटरमीडिएट था. when red flowered variety was crossed with white flowered variety in incomplete dominance, the offspring was pink. An intermediate between the two, a fine mixture of the two, a partial expression of the two. But in codominance, heterozygote. In codominance, heterozygote shows a phenotype different from that shown by either of the homozygotes. ऐसे आप नोट करोगे. In codominance, the heterozygote shows a phenotype heterozygote shows a phenotype which is different from either of the homozygotes. Two homozygotes. अगर इस क्रॉस करो दोन होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट युस तत हेटेरोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग बने तथ युस फिनोटाइप सुन दो पेरेंटल टाइपों मज कसी डिफरेंट फ्रॉम दैट शोन बाय ईदर ऑफ द होमोजाइगोट्स. मेरे कहने का मतलब इस तरह से है. In case of codominance, we get an F1 offspring with a phenotype different from parental types. But in case of incomplete dominance, we get a phenotype which is an intermediate between the two parental types. It can be best clarified by an example. लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखिए, the expression of codominant alleles is equal in F1 hybrid.
the expression of F1 alleles is equal, the expression of F1 alleles is equal, the expression of alleles is equal in the F1 hybrid. देखिए हम कोडोमिनेंस में क्रॉस करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन ऑफ कोडोमिनेंट एलील्स है वो F1 में इक्वल है, जबकि वो वहां पे एक मिक्सचर होता था दोनों का. द एक्सप्रेशन ऑफ कोडोमिनेंट एलील्स, द एक्सप्रेशन ऑफ कोडोमिनेंट alleles is equal in the F1 hybrid. The F1 hybrids follow the law of segregation. यानी यहां पे हमने क्रॉस किया, सपोज दो पेरेंट्स को क्रॉस किया, ऑफस्प्रिंग बना, वो पेरेंटल टाइप्स दोनों दिखाता है, डोमिनेंट का भी रिसेसिव, यानी डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एक्सप्रेस इक्वली. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ किस्म की मिक्सिंग हो गई है, ये ब्लेंडिंग है, क्योंकि जब हम F1 ऑफस्प्रिंग को सेल्फिंग करते हैं अपॉन सेग्रीगेशन in order to produce F2 generation, the ratio is once again 1:2:1. The F1 hybrids follow the law of segregation. The F1 hybrids follow the law of segregation. यानी यहां पे सेपरेशन होता है, नॉर्मल सेग्रीगेशन होता है. एंड F2 progeny and F2 progeny shows a ratio of, exhibits a ratio of 1:2:1. This 1:2:1 ratio indicates that codominance is not blending inheritance. What is codominance? Codominance is a phenomenon wherein the two alleles of the same gene lack dominant recessive relationship. Both the codominant alleles are able to express themselves independently when present together. And in codominance, the heterozygote shows a phenotype which is different from either of the homozygotes. And the F1 hybrids have equal expression of codominant alleles. It can be explained by example. Tell क्या को simply codominance. Codominance is intragenic interaction. So phenomenon. ये the dominant recessive equally express गैस. ये the dominant's आस न ability to inhibit the expression of recessive. ये the recessive तो गैस तिथाई पर express इस पर dominant गैस. हाँ एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा. In codominance, both dominant and recessive are shown by capital letters with superscripts. In codominance, both the dominant
and recessive. In codominance, both dominant and recessive are shown or represented by same capital letters. Same capital letters with superscripts. मेरे कहने का मतलब इस तरह से, with different superscripts. हमने कोडोमिनेंस से पहले डोमिनेंस की बात की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की. वहां हम डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से. क्योंकि कोडोमिनेंस में रिसेसिव भी बिल्कुल उसी तरह एक्सप्रेस होता है जिस तरह डोमिनेंट. So both dominant and recessive are shown by or represented by same capital letters with different superscripts. I will justify it. So what is codominance? An interaction between the alleles of the same gene where both dominant and recessive express equally in the organism. In a codominant, alleles are capable of showing independent expression when present together. The classic example of codominance. Some common examples of codominance. Some common examples of codominance. Some common examples of codominance are as under. Some common examples of codominance are as under. Number 1, coat color. Coat color in short-horned cattle. It is classic example of codominance. Coat color in short-horned cattle. Human blood groups. AB blood group, in human beings. AB blood group. HbA, HbS, HbS, heterozygote, of sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Mn blood group, in human beings. सबसे कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज कोड कलर इन शॉर्ट हॉर्नड कैटल्स. Coat color in short horned cattle, AB blood group in human beings,
HbA's condition, heterozygous condition of sickle cell anemia in human beings, Mn blood group in human beings. These are some examples of, I may say, codominance. What is codominance? Wherein dominant and recessive express equally in the F1 offspring. Wherein there is no dominant recessive relationship. Wherein the codominant alleles in F1 have equal proportion, have equal ability of expression. Coat color in short horned cattle. Coat color in short horned cattle. The coat color in short horned cattle, the coat color in short horn breed of cattle, short horn breed of cattle is a classic example of coat color in short horn breed of cattle is a classic example of codominance. जब हम शॉर्ट हॉर्नड कैटल्स को देखते हैं वहां पे दो किस्मों के कलर्स है. जो फेदर कलर है उनका, शॉर्ट हॉर्नड कैटल्स की जो बॉडी है, जो बॉडी हेयर्स है, उनका जो कलर है उसमें वो दो वेरिएंट्स रखते हैं, रेड एंड व्हाइट. रेड एंड व्हाइट. द कैटल्स हैव, द प्योर ब्रीडिंग कैटल्स हैव either red or white color. ये जो शॉर्ट हॉर्न कैटल है, हमें दो ब्रीड्स इसकी है, दो वेरिएंट्स है इसकी. एक का रेड कलर है बॉडी कलर और दूसरों का व्हाइट है. व्हेन ए रेड कलर cattle is crossed with a white color cattle, when a red color cattle is crossed with white color, देखिए कोडोमिनेंस की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो कोट कलर इन कैटल्स है ये अक्सर बेशतर आपसे पूछी जाती है और आपकी बुक्स पे ये दी गई है. कोट कलर इन कैटल्स, कैटल विद रेड कलर वाज क्रॉस्ड विद कैटल विद व्हाइट कलर. यानी रेड कोट कलर को, जिस कैटल का रेड कोट कलर है उसको क्रॉस किया गया विद ए कैटल विद व्हाइट कोट कलर. पेरेंट से ही है व्हाइट कोट कलर. रेड
कोड कलर वाली कैटल को क्रॉस किया गया व्हाइट कोट वाली कैटल के साथ। व्हाइट कोट कलर, रेड कलर के लिए इसके पास दो फैक्टर्स CR, इट इज रेड कलर, डोमिनेंट लेटर विथ सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह से जो व्हाइट कोट वाली है वो हुआ CW, इनका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। दीज आर पेरेंट्स। जब इनको क्रॉस किया गया, देखिए भाई गैमीट में एक होगा, एक R होगा, गैमीट में एक W होगा, और जब F1 ऑफस्प्रिंग बनेगा वो CW है। It is not red. It is not an intermediate between red and white. Instead, it is both red and white. It is not red. It is not white. It is red and white. When a red color cattle with red coat color is crossed with a white color cattle, the F1 offspring has roan coat. Red coat color cattle is crossed with white coat color. The F1 offspring is having roan coat. The F1 offspring has roan coat, RON, roan coat, not rain coat. Roan coat or spotted coat. Roan coat or spotted coat. So roan coat or spotted coat. F1 offspring has roan coat or spotted coat. Roan coat or spotted coat, wherein both red and white colors are seen. Wherein both red and white color strips are seen in a definite fashion. यानी ये जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसके डेफिनेट पैचेस है, डेफिनेट पैचेस ना वन रेड कलर अत करो क्रॉस वाइटस सह पिंक कह यह इंटरमीडिएट कह रेड कह ना डोमिनेंस ना इनकम्प्लीट बल्कि अगर बॉडी वाइट पेट किन रेड स्पॉट्स इन अ डेफिनेट फैशन इन अ डेफिनेट पैचेस बट नो हेयर ऑफ द स्किन नो हेयर ऑफ द बॉडी has intermediate color. No hair of the body has intermediate color. Intermediate color के पैच नहीं है. Intermediate color of red and white. See, we have crossed a red coat color breed with a white coat color breed. Cattles के दो टाइप्स हमने ली, एक का कोट कलर रेड है, दूसरे का कोट कलर व्हाइट है. क्रॉस किया, ऑफस्प्रिंग बना. उस ऑफस्प्रिंग में जब हम कोट कलर देखते हैं, there is both red as well as white, dominant as well as recessive. They have equally expressed. They are in different patches, but no hair of the skin is showing intermediate color of red and white. This is not dominance, this is not incomplete dominance, this is codominance. Now red and white have expressed.
This is called a raincoat. F1 offspring, F1 generation shows raincoat, RON, raincoat. कल को आपसे पूछा जाता है, raincoat color in cattle is an example of dominance, incomplete dominance, over-dominance, co-dominance. It is an example of raincoat color in cattle is an example of co-dominance, wherein dominant and recessive express equally. Asko red color breeders cross with white color offspring and hoes raincoat. Raincoat means supported coat. Ago akoi color, bago printasmas. Wushan varia janavar says wushan even body asan black, varian chasan white. Cross core at black body but white spots. This is called a supported coat. Even cattle is short horn breed of cattle is that is current cross redus white it offspring used to show red and white. This is co-dominance. But remember it, this co-dominance is not an example of blending inheritance. Co-dominance is not an example of blending inheritance. Ab hoge sir kaise? See, we have now C or CW. This is supported coat, raincoat. अगर हम इसी C और CW को क्रॉस करते हैं, C और CW, what is called selfing, in order to raise the F2 generation. C और CW, हम इसको मेल लेते हैं, इसको फीमेल. Now we will cross them as per RC Punnett square. Male, female, C or CW, C or CW, C or CR. It is red. C or superscript, CW, C or CW, CW, CW. This is F2 generation. This is F2 generation. Here CR is red. It is red. CR CW is spotted in a rain. Spotted coat or raincoat, and CW is white. So red, spotted, and rain colored, spotted, white. In F2 generation is 1:2:1. This 1:2:1 ratio of F2 indicates that F1 has undergone segregation. So co-dominance is not an example of blending inheritance. Co-dominance is not an example of co-dominance is not an example of blending inheritance. Blending inheritance, as both the parental types appear या reappear in F2 generation. जिगरो अशुन co-dominance यह सा interaction ये dominant recessive relationship च lacking ये dominant तो recessive express गच्छन equally co-dominance मज युस F1 heterozygotus युस phenotypic expression च आसन
सचासन दोनवनी पैरेंट होमोजाइगस पैरेंटो नी डिफरेंट अत दोनवे एक्सप्रेस गसन इक्वली यम सातन वो कोडोमिनेंट alleles competent to express independently when they come together and if they are lacking dominant recessive relationship as one codominant alleles chin haven with capital and small letters they are shown by capital letters because there is no recessive they are shown by same capital letters with different superscripts number of examples exist in literature which explain which highlight codominance चाहे ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप चाहे HbA HbS हीमोग्लोबिन कंडीशन सिकल सेल एनीमिया हस मन चाहे MN ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स मन पर मैं दिस अख एग्जांपल कोट कलर इन कैटल्स शॉर्ट हॉर्न ब्रीड ऑफ कैटल्स शो टू टाइप्स ऑफ कोट कलर रेड एंड व्हाइट ऑफस्प्रिंग वाज स्पॉटेड कोट रोइन कोट कर सेल्फिंग दैट ड्राई रेड थी दैट ड्राई व्हाइट थी that dry supported in the ratio of 1:2:1 हाँ example is blood group just करो इस next lectures में clear क्या है आठ मन छह पढ़ो multiple allelism या pleiotropy या hemoglobin कर में का I will discuss them both these examples in my next lecture inshallah.